Hello students, myself Professor Ashok M. Jain. I'm going to talk, in this lecture I'm going to talk about the magnetic leakage and hysteresis loop. Earlier in the lecture number 1.2, 1.3, 1.4, I discussed about what is a magnet, what is a magnetic material, what is a magnetic field, flux density, flux, etc. etc. Now in this lecture I'm going to talk about the magnetic leakage and hysteresis loop. After studying this presentation, you will be able to understand the concept of leakage and fringing, hysteresis loop and related terminology, hysteresis loss and eddy current loss. Now, what do you understand by the leakage and fringing? Suppose see here, you can see this is the ring and this is the current carrying coil. We know any coil which carries the current will produce the flux around it. You can see these lines. These are the flux produced around the coil. Now you know who will carry that flux. We know that flux created by the current carrying coil, and that flux will carry by the core. This core, iron core, will carry the flux. Right? This is the concept, and this is called as phi I. The flux produced by iron, phi I, or you can say total flux produced. Okay? Now, here we'll discuss what is the meaning of leakage flux. Okay? So, here the flux that does not follow the desired path in a magnetic circuit but takes different paths around the winding is known as leakage flux. Right? The flux that does not follow the desired path in a magnetic circuit but takes different paths around the winding is known as leakage flux. So see here, total flux, you can say, just I'm going to show here by drawing one figure. Suppose this is the ring. And this is the air gap. Here coils are placed over it. This is the ring and it is carrying the coil. Suppose this is the coil. And when you supply the current, so what will happen? When you supply the current, that coil is called as current carrying coil. So it will produce a flux around it, and that flux will flow through the here. Through the ring. So this is called as phi I. This is phi I. Total flux produced. But what will happen? Some flux will not cross the air gap. Clear? Some flux will take different path here only. It will links with the coil only here. Here. So this is called as phi L, leakage flux. This flux जो सिर्फ coil या you can say ring, iron ring से link कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? Leakage flux. Clear? So based on that we can develop the concept of leakage coefficient. Right? Now I'm coming back to here. So the flux which crosses the air gap is known as useful flux phi G. So you can say out of this total flux produced, some flux is crossing the air gap. इसको क्या बोलते हैं? Phi G, air gap flux या phi useful flux, right? And if the phi I is the total flux produced, so and flux useful flux or air gap flux क्या होगा? Phi I, that is the total flux minus phi L. हमको मालूम है total flux कितना प्रोड्यूस हो रहा है? Phi I. उसमें से कुछ फ्लक्स सिर्फ आयरन से लिंक कर रहा है. So
so air gap flux क्या होगा, कम होगा, तो phi is equal to phi I minus phi L. Now based on that we can define the leakage coefficient. What is the leakage coefficient? It is defined as the ratio of total flux to the air gap flux. Total flux to the air gap flux. Total flux upon useful flux है air gap flux. Total flux क्या है, phi I है. यूजफुल फ्लक्स क्या है, phi g है. phi g क्या है, phi I माइनस phi L. लीकेज फ्लक्स माइनस हो जाएगा. अगर ऐसा होता है तो लेमड़ा क्या होगा, ऑलवेज मोर देन 1 बिकॉज दिस इज मोर, दिस इज लेस, so it is more than 1. So always leakage factor, leakage coefficient always more than 1. This concept will be used later on to solve the numerical. We will discuss one numerical based on this, right? Now what is a fringing? So fringing क्या है, as shown in figure, the parallel lines of flux, parallel lines in the air gap repels to each other. Now see here, suppose करो, I'm just drawing one more figure here only. This is the ring. This is the ring. Here I have given the coils. Okay, so coils are placed here. Coils are placed here, and this is the current carrying coil. It is carrying the current I ampere. What will happen? Flux will be produced, and that flux will flow through the here. Suppose flux ऐसा flow हो रहा है, right? Number of lines of flux is there. Number of lines. So these lines of flux, same lines of flux will repel to each other or not? Yes, they will repel to each other. Repel करेगा तो these lines of force will repel to each other. So what will happen? Number of lines of force here. These lines of force will bulge out. They will spread out in the air gap. आपको मालूम है अगर एक पानी है, तो पानी अगर एक पाइप में से फ्लो हो रहा है तो वो पाइप में से फ्लो होगा, लेकिन अगर एक ओपन डक्ट मिल जाए उसको तो क्या होगा, वो पानी एक जगह से आके दूसरी जगह जाना है वो ठीक है, बिकॉज ऑफ सम फोर्स, बिकॉज ऑफ स्लोप, बट जहां खुली जगह मिलेगी वहां फैल जाएगा. Similarly, यहाँ air gap में these lines of force will bulge out, they will spread out in the air gap. अभी क्या होगा, ये लाइन यहाँ आ रही है, ऐसा होके ऐसे जाएगी, ये लाइन यहाँ आ रही है, ये होके ऐसे जाएगी, जाएगा पूरा का पूरा फ्लक्स, whatever the flux यहाँ से आ रहा है सेम का पूरा फ्लक्स यहाँ जाएगा ही, but this lines of flux lines will spread out, they will repel to each other. So यहाँ what will happen, effective area here in the air gap will increase, और अगर effective area बढ़ेगा here this area में तो what will happen, effective area बढ़ने से flux तो same है, flux upon area, अगर area बढ़ रहा है तो B क्या होगा, flux density, B equal to flux upon एरिया. बी क्या होगा, कम हो जाएगा. क्यों कम हो जाएगा, बिकॉज बी इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, फ्लक्स अपॉन एरिया. फ्लक्स सेम है क्योंकि सीरीज पाथ है ना, ये फ्लक्स विल बी सेम, फ्लक्स सेम है, बट एरिया बढ़ने से क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एरिया बढ़ने से फ्लक्स डेंसिटी बी विल बी रिड्यूस. सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट फ्लक्स डेंसिटी इन द आयरन. बी आई इसको बोलेंगे बी आई, फ्लक्स डेंसिटी इन द आयरन, और यहां बोलेंगे Bg फ्लक्स डेंसिटी, सॉरी फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप. सो ऑलवेज फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप विल बी लेस देन फ्लक्स डेंसिटी Bi, राइट? क्यों, इसका इफेक्टिव एरिया यहां पर क्या हो जाएगा, कम होने वाला है. सो बी केयरफुल अबाउट इट, right? So this is the concept. So this effect is known as what, fringing. This effect is known as fringing. What is a fringing? These flux lines will spread out in the air gap. This effect is known as fringing. So be careful about it. And because of fringing, flux density in the air gap will be less than the flux density in the iron ring. Okay. So मैं इसको spread कर देता हूँ. Sorry.
Okay. Now I'm going to discuss about one numerical based on this concept. A laminated soft iron ring of relative permeability 1000, mu r is given 1000. It has mean circumference 800 mm. मतलब total Li is given, mean circumference is 800 mm and cross sectional area is 500 mm square. Right? The radial air gap 1 mm का air gap है. Width in the ring which is wound with 1000 turns. 1000 turns दिए हैं. Calculate the current required to produce a flux of 0.5 milliweber if leakage factor is 1.2. This is very important case. इफ के बदले में इफ लीकेज फैक्टर 1.2 कुछ नहीं दिया मतलब लीकेज फैक्टर इज 1 है, इसका मतलब है इसके पहले के प्रेजेंटेशन में आई हैव डिस्कस 3 न्यूमेरिकल सेम प्रॉब्लम था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लास्ट लाइन last part of this numerical 1.2 this problem will become different, right? I will discuss this part later on. मैं यहां से डिस्कस करता हूं, यहां से you know total Ni equal to what? Ni of ring plus Ni of air gap. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. टोटल इट इज ए सीरीज एग्जांपल, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट. सो Ni इक्वल टू क्या होगा? Ni ऑफ आयरन रिंग प्लस Ni ऑफ एयर गैप. Ni इक्वल टू क्या होता है? HL ऑफ आयरन रिंग प्लस HL ऑफ एयर गैप. H इक्वल टू क्या होता है? B अपॉन म्यू जीरो म्यू आर इंटू Li. H इक्वल टू क्या होता है? B अपॉन म्यू जीरो म्यू आर 1 होता है एयर गैप में इंटू Lg. ये प्रॉब्लम है. क्लियर? B upon mu 0 mu r, that is H into Li plus B upon mu 0 only, mu r equal to 1 in air gap, right, into Lg. क्लियर? ये तो हमारा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पहले था, लेकिन हियर इन दिस प्रॉब्लम लीकेज फैक्टर इज 1.2 दिया है. इसका मतलब क्या है? अगर ये 1.2 या अदर देन 1 है, 1.3 1.4 whatever there, so B of iron ring and B of air gap will be different. Be careful about it. So, अभी लास्ट पेज पे मैंने डिस्कस किया था BI और BG will be different. Always BG will be less. Clear? Because of this factor only. So we have to find BI and BG first. Before solving this problem, I am coming back. Now, air gap flux phi G is given कितना है? 0.5 milliweber. 0.5 milliweber is given, that is 0.5 into 10 raised to power minus 3 Weber. Phi G is given. Leakage factor is given 1.2. We have studied leakage factor क्या होता है? Phi I upon phi G, total flux upon useful flux, phi I upon phi G. और phi G दिया है 1.2 दिया है, इसका मतलब phi I मिल जाएगा. phi I क्या आएगा? 1.2 into phi G. Phi I equal to what? Phi I equal to what? 1.2 into phi G, that is useful flux. 1.2 into phi G कितना है? 0.5 मिलीवेबर दिया है एयर गैप फ्लक्स, तो ये हो जाएगा 0.6 मिलीवेबर. 0.6 into 10 raised to power minus 3. Now it is very simple. You can find BG and BI. BG equal to क्या हो जाएगा? phi G upon area. B equal to flux upon area. phi G कितना है? 0.5 मिलीवेबर upon 500 millimeter square, मतलब 10 raised to power minus 6 meter square. So if you will get 1 Tesla. BI क्या होगा? That is total flux density BT. BI equal to ये phi I निकाला हमने, कितना है? 0.6 into milliweber upon same area 500 into 10 raised to power minus 6. So you will get 1.2 Tesla. ये वैल्यू 1.2 टेस्ला यहां रखना है बिकॉज इट इज BI और BG कितना है? 1. BG कितना है? BG 1 और बाकी तो मालूम है आपको. LG कितना है? 1 mm, 1 into 10 raised to power minus 3.
यहाँ LI कितना है, LI कितना है 800 mm, तो टोटल सरकमफ्रेंस थी, उसमें से 1 mm कम हो गया तो कितना आएगा 799 mm, राइट। दिस वाज 1 mm, 800 mm क्या था टोटल सरकमफ्रेंस, उसमें से 1 mm माइनस करना है बिकॉज ऑफ, तो 1 mm कम करेंगे तो 799 mm, दैट इज 0.799 मीटर। म्यू आर दिया है 1000 रिलेटिव परमेबिलिटी, 5 कितना होता है, म्यू जीरो इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -7, 4 पाई इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -7, इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट 1559, 1559, और टोटल एन आई क्या है, एन इज गिवन 1000, सो आई मिल जाएगा आपको 1.55 एम्पियर, right? So this is the way of solving the problem. Now I'm just erasing. Okay. Next, I'm going to discuss about the BH curve and hysteresis loop. What is a BH curve and what is a hysteresis loop? See here, if you plot the magnetizing force H equal to क्या होता है Ni upon L, H equal to Ni upon L versus the B, and we know B is proportional to H. इसका मतलब है if you increase the H, B will also be increased. B is proportional to H, right ना? So अगर H equal to क्या होता है Ni upon L, N is constant, L length is constant, only I, you are varying I, so H is proportional to I. तो आप यहाँ चाहो तो I versus B कर्व ले सकते हैं. So this is the BH curve. Clear? Now I am taking a core here. This is the core, and you can say it is an electromagnet, and this is the coil placed over it. It is called a solenoid, and this is the current carrying coil. So as this coil will carry the current, what will happen? When the current will flow, what will happen? Clear? So this is called as current carrying coil, and when this current carrying coil is there, so this will produce a flux. Current carrying coil will produce a flux. Flux will be produced. Clear? Flux है तो क्या है? B है. B equal to क्या होता है? Flux upon area. So B will be developed. Now, first of all, I am keeping this switch H open. अगर switch open है, this is the source. Will supply the current? No. I am connecting this coil through the switch, through the variable resistance is called the variac. Variable resistance or rheostat. Clear? It is called as rheostat. Okay, and source is there. Now, please see here. I am closing this switch. As you close this switch, what will happen? जैसे close करेंगे, because of source current, I will flow, and I am keeping this resistance in maximum position. I am keeping this switch to maximum position. अगर this resistance is maximum position, so what will happen? Current equal to what? V upon R. अगर R maximum है तो I will be less. I कम है तो I current, this is called as current carrying coil. So it will produce a current carrying coil will produce a flux. So flux will produce, B will be developed. And if the I is less, H will be less. H is less, so B will also be less, because B is proportional to H. If I is less, H will be less, B will be less. So you will get this point. Again, I am going to increase the I. How will you increase the I? By decreasing this resistance. So I बढ़ेगा तो H बढ़ेगा, so B will also increase. You will get this path. Clear? And continuously as you increase the I, H will increase, B will increase. Clear? But after some time, it will not follow this path. ऐसा जाना चाहिए था. Because as you increase the H, B will also be increased, but it will not increase linearly. After some time, core will start saturating. जैसे हम कभी खाना खाने बैठते हैं तो भूख लगी है तो क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, और जैसे ही हमारा पेट भरने लगता है, हम सैचुरेट होने लगते हैं, तो क्या होता है, अपनी स्पीड कम हो जाती है. सिमिलरली व्हेन यू इंक्रीज द H, B will also be increased, but after some time that core will be saturated, and after some time this will start tilting.
from here, right? And after some time this will reach to point P. After some time again if you increase the I, again if you increase the H, but B will become constant, इसके आगे जाएगा नहीं. That is called as B max. ये पोजीशन क्या है? B max. इसके आगे flux density will not be increased. The core will be completely saturated. Different material, different B max. Clear? एक आदमी है, दुबला पतला आदमी है, वो कम चपाती खाएगा, 3 खाएगा, है, व्यापारी 3-4 चपाती खाएगा. एक मजदूर है तो उसका चपाती कितनी खाएगा? 3-4 की, 5-6-7 ज्यादा खाएगा, उसको ज्यादा मेहनत करता है. सिमिलरली B max will be different for different magnetic material. So इसके आगे आप आज H बढ़ाते जाओ, B will not be increased. That is called as B max. Core will be saturated completely. Now, so this is following the path OP. It is following the path OP, right? Now I am starting decreasing the value of current I. How will you decrease the I? I am going to start the increasing the value of R. जैसे R बढ़ाएंगे I कम होगा. I कम होगा तो क्या होगा? I कम होगा तो H कम होगा. H कम होगा तो क्या होगा? B will also be start decreasing, but it will not follow the path PO. It will follow the path PC. ये उल्टा वापस यहीं से नहीं आएगा. It will follow the path PC. इसका मतलब you can say, क्या कह सकते हैं आप? B is lagging or leading? B लैग कर रहा है. जिस पाथ से हमने H बढ़ाया था उसी पाथ से H कम कर रहे हैं, बट B उस पाथ से कम ना होकर स्लोली कम हो रहा है. इसका मतलब B is lagging and this is called as hysteresis. This is called as hysteresis. Now आप H कम करते 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 0 पे आ गए. मतलब I कितना हो जाएगा? अगर 0 हो गया तो H will also be 0. Clear? But in this way, अगर आप I कम हो गया, H कम हो गया, 0 हो गया, so B will also be 0. But ऐसा नहीं होता. B will not become 0. Some flux density will remain present. इसको क्या बोलते हैं? OC. Okay, it will be OC. That is the flux density will remain present in the core, OC. Okay, and this is called as residual flux density और remnant flux density. इतनी flux density बच जाएगी. कभी भी आप कोर को मैग्नेटाइज करने के बाद उसको डीमैग्नेटाइज करेंगे, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज ना होके थोड़ी सी फ्लक्स डेंसिटी बचेगी. नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द H इन द अदर डायरेक्शन. इसकी पोलैरिटी मैं उल्टी कर देता हूँ, ऐसी कर देता हूँ, उल्टा, रिवर्स पोलैरिटी. H तो क्या होगा? अगेन आई एम इंक्रीजिंग द I. H will increase in the other direction. This is the H in the other direction. Clear? So B will not increase. B will decrease. यहाँ पर आके डिक्रीज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इसका मतलब है यहाँ फ्लक्स डेंसिटी B will become 0. Core will be completely demagnetized. Clear? So is it require some force in the reverse direction? Yes, it is requiring the force in the reverse direction to make the core completely demagnetized. This force, this amount, मैं यहाँ वैल्यू नहीं लिखी, this amount, this force required to make the core completely demagnetized, इसको क्या बोलते हैं? Cohesive force. This force is called as cohesive force, right? It is requiring the cohesive force. So force required to make the core completely demagnetized called as cohesive force. Now again I am increasing the value of H in the other direction. B will also increase in the other direction. Core will be saturated. Then I am decreasing the H. B will also be decreased. Remnant flux density. Again I am increasing the H, and it will follow. It will make a complete loop called as hysteresis loop. This complete loop, O P C E G P called as complete loop. इसका मतलब है आपने एक राउंड वेरिएशन किया है AC का और एक लूप बन गया. अल्टरनेटिंग में क्या होता है? AC सप्लाई में एक साइकिल, एक पॉजिटिव देन नेगेटिव, एक साइकिल में एक लूप बना. 2 साइकिल में 2 लूप बनेंगे. ऐसे इंडिया में व्हाट इज द सप्लाई? 230 वोल्ट. ओके, मैग्नीट्यूड. फ्रीक्वेंसी कितनी है इंडिया में? 50 हर्ट्ज. 50 साइकिल पर सेकंड. एक सेकंड में 50 साइकिल बनती हैं ऐसी, तो ऐसे 50 लूप बनेंगे. क्लियर?
In USA, what is the frequency? 60 hertz, 60 cycle per second. So USA में ऐसे 60 लूप बनेंगे इस, और each loop represents the hysteresis loss. एरिया ऑफ लूप, जो एरिया रहता है ना इसको क्या रिप्रेजेंट करता है? हिस्टेरिसिस लॉस. सो सेम मटेरियल इंडिया में और सेम मटेरियल यूएस में, hysteresis loss will be same or different? Different. US में hysteresis loss will be more. Why? Because उनका ये कितने लूप हैं? साइकिल है एक सेकंड में 60, तो 60 लूप बनने वाले हैं. तो इन USA 60 लूप मीन्स more hysteresis loss will be there. क्लियर? अगेन हिस्टेरिसिस लॉस क्या पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ लूप. अगर आपको हिस्टेरिसिस लॉस कम करना है तो ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करो जिसका लूप एरिया कम हो, थिन बने ये. ओके, ठीक है. So I have explained it already. Now what is the core losses? I want to discuss the core losses. We will discuss this core loss in the last unit again in transformer. But core loss दो पार्ट हैं. core loss के दो पार्ट कौन कौन से? एक होता है hysteresis loss और दूसरा होता है eddy current loss. Hysteresis loss and eddy current loss. What is the hysteresis loss? Suppose करो and hysteresis loss in DC will be 0. Why it is 0? And why the hysteresis loss will takes place in the AC only? The reason ये है कि सपोज करो DC में आपने इसको कोर को क्या किया है? मैग्नेटाइज किया थ्रू व्हाट? रिहोस्टेट. ओके, या यू हैव कीपिंग इट कांस्टेंट, तो करंट कांस्टेंट है. वन विल बिकम एन पोल एंड दिस विल बिकम साउथ पोल. क्लियर? सो ये जो मैग्नेटिक, दीज आर द मैग्नेटिक डोमेन्स. अभी मैग्नेटिक, सपोज करो कि आई हैव ए आयरन, say here this is the iron bar. So this is the magnetic domain. They are called as magnetic domains. Number of magnetic domains are there. You can say they are at randomly arranged. मतलब मैग्नेटिक डोमेन्स उनका कोई डायरेक्शन नहीं है, वो कहीं उनका मैग्नेटिक डोमेन्स का जो मूवमेंट है इट इज एट रेंडमली अरेंज्ड. क्लियर? ओके. नाउ जैसे ही आप इसको मैग्नेटाइज करते हैं, इसको करंट कैरिंग कॉइल देंगे तो क्या होगा? करंट कैरिंग कॉइल प्लेस करेंगे तो क्या होगा? दिस विल बिकम ए मैग्नेट. मैग्नेट बनने के बाद दीज मैग्नेटिक डोमेन्स विल बी अरेंज्ड इन दिस वे, in particular direction. So we can say it is a magnet. This is the difference between this. This is iron ore, this is a magnet. You can say these are the magnetic domains are arranged in a particular direction, right? So, okay. But in case of AC, you know, in case of AC में क्या होता है? It is like this. अगर आप टाइम वर्सेस मैग्नीट्यूड लेंगे तो it is like this. एक साइकिल, दूसरी साइकिल, like that. क्लियर ना? तो ये मैग्नीट्यूड है यहाँ पर, यहाँ और यहाँ टाइम. सो दिस इज द एसी सप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ साइकिल में ये मैग्नेट ऐसे रहेगा. दिस विल बी द नॉर्थ पोल, दिस विल बी द साउथ पोल. हाफ साइकिल, दूसरी हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम नॉर्थ पोल, दिस विल बिकम साउथ पोल. व्हाई? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स विल आल्सो बी चेंज. यहाँ पहले यहाँ नॉर्थ था, यहाँ साउथ था, अभी ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डोमेन विल आल्सो बी चेंज. और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डोमेन चेंज हो गया, राइट? नो प्रॉब्लम. अब प्रॉब्लम क्या है कि to change the direction of magnetic domains, will it require some energy or not? Obviously it will require. So for changing the direction of magnetic domains, it will require some energy, because ये direction ऐसा है और reverse हो गया. So all these magnetic domains will require some energy, and this is simply wastage of energy called as what? Hysteresis loss. इसको क्या बोलते हैं? hysteresis loss. Clear? Okay. So in case of AC, hysteresis loss will be there, but in case of DC,
नो हिस्टेरिसिस लॉस बिकॉज एक बार ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया, तो ये नॉर्थ ही रहेगा, ये साउथ ही रहेगा. नो हिस्टेरिसिस लॉस विल टेक्स प्लेस. बट इन केस ऑफ एसी नाउ हिस्टेरिसिस लॉस का पे डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे. ये इंडिया में व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एक सेकंड में 50 बार बनेगा. ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स विल चेंज 50 टाइम्स. बट इन यूएसए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन यूएसए 60 हर्ट्ज, एक सेकंड में 60 बार चेंज करेगा. तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स विल चेंज 60 टाइम्स. सो हिस्टेरिसिस लॉस विल बी मोर इन यूएस. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, हाउ टू रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉस. मान लो इंडिया में आपको कम करना है, तो क्या करना है, आपको ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करना है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स कम हो. मैग्नेटिक डोमेन्स कम होंगे तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड और वेस्टेज ऑफ एनर्जी विल बी लेस और मोर लेस. So हिस्टेरिसिस loss, if you want to reduce, you have to select the material which is having less magnetic domains. That is the high grade silicon steel. High grade silicon steel will have less magnetic domains, right? Eddy current loss. What is eddy current loss? एडी करंट लॉस एक्चुअली क्या होता है, सपोज करो हमने देखा है कि यू वांट टू जनरेट द वोल्टेज, यू वांट टू जनरेट ईएमएफ इन द कॉइल. तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रोटेट द कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड. कॉइल को रोटेट करेंगे तो क्या करेगा, कॉइल विल कट द फ्लक्स. क्योंकि कॉइल ऐसे रोटेट नहीं हो रही कहीं भी. कॉइल यू हैव केप्ट दैट कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड यू आर रोटेटिंग द कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड. सो इट विल कट द फ्लक्स. तो फ्लक्स से कट होगा तो क्या होगा, डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्स इन डिफरेंट पोजीशन. So flux linking with the coil will be different, and according to Faraday's law, E equal to what? Equal to what? Equal to what? N d phi by equal to N d phi by dt. So EMF will be induced in a coil, N d phi by dt, right? And so that is the concept. Now this EMF induced depends on what? Cutting of flux. And you are rotating the coil. So actually for rotating the coil you have to rotate the core also. So because coil kahan placed है, core के ऊपर. So coil will rotate means core will rotate. So core will also cut the flux. Okay, and when the core will cut the flux, some amount of EMF will also be induced in the core. So EMF is inducing in the core, and when the EMF will induce in the core, what will happen? EMF induced in the core, that is called as, okay, and divided by the resistance of the core, you will get the eddy current. That is called as eddy current will be produced in the core, and more the eddy current, more the losses. Eddy current का square into resistance of the core. It is what? Eddy current का square into resistance of the core, that is called as eddy current loss. Okay, and eddy current loss will take place. More the eddy current loss, and always we know all losses are converting into heat. So more the losses, more the heat, and once losses are more, heat is more, that core will be heated and it may damage the insulation of the coil. So always we have to reduce the eddy current loss. How will you reduce it? Just in place of solid core, I am going to use the laminated core. इसको बोलते हैं thin laminations we are using. Laminated core we are using. So by using the laminated core, what will happen? What will happen? Eddy current loss will be reduced. So this is the concept of reducing the eddy current loss. We'll discuss this again in unit number that transformer, right? So I'm going to rub it. So this is over. Questions for assignment, that is the what is the magnetizing curve, that is BH curve. Second, explain the following terms. Useful flux, what is the useful flux? What is the fringing? Third question we have, what do you understand by remanent flux density and cohesive force? These are the questions, you have to do it.
Okay, thank you very much for listening